Welcome, dear friends. Once again, I am here with a macroeconomic perspective. आप जैसे जानते हो कि अभी हाल में ही 1 फरवरी को हमारी सीतारमन जी बजट पेश करेंगी। और यहाँ पर एक एक्सपर्ट है हमारे जो आरबीआई के हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये वर्क करती हैं, उसकी मेंबर है आसिमा गोयल जी। इनका एक आर्टिकल आया है, तो उस उन्होंने कुछ कई बातें कही हैं, और जो मेरी इकोनॉमिक्स के प्रति समझ है, डेप्ट जीडीपी जो रेशियो है वो भारत का बढ़ता जा रहा है, और इसके ऊपर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो मेरा मानना है जी कि अगर डेप्ट बढ़ना तो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अगर डेप्ट किन कारणों से बढ़ रहा है इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर डेप्ट हमारा कैपिटल हम जो रिसिप्ट लेते हैं, बोरोइंग कर रहे हैं और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर डेब्ट बढ़ रहा है तो ये बहुत बुरी बात नहीं है। मतलब आसान भाषा में अगर समझें तो जो एम्प्लॉई को हम सैलरी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहे जाते हैं। और अगर हम सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो दोनों खर्चे हैं हमारे, लेकिन एक प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, और ये आने वेल्थ क्रिएशन करता है और कैपिटल बेस को क्रिएट करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो वो उसकी वजह वो उस पर जो खर्चे हो रहे हैं वो ठीक माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत बार इस पर गवर्नमेंट पर आरोप लगाया जाता है, सरकारों पर आरोप लगाया जाता है कि खर्चे बढ़ रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। लेकिन हम याद रखें कि 1991 के समय में हमारे यहाँ फिजिकल डेफिसिट 8% से ऊपर था, और आज के समय में फिजिकल डेफिसिट काफ़ी कम है, उसके आधे के बराबर है। जिसको जब अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इसको 3% तक लाने का उनका टारगेट था, लेकिन वो आ नहीं पाया था। फिर बाद में कोविड ही आ गया। लेकिन इस बीच में जो ये स्टेटमेंट आया है वो हमारे लिए काफ़ी गौरव कर गर्व इस पर काफ़ी गौर करने की ज़रूरत है। तो इसमें उनके हम उनका जो एक लेख आया उसको मैं रीड आउट करना चाहूँगा। फास्टर रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट विल सेंड अ वेरी गुड सिग्नल। उन्होंने कहा है कि अगर फिजिकल डेफिसिट में जो फिजिकल डेफिसिट का एक फॉर्मूला होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है, और माना जाता है कि फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर होता है। तो फास्टर रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट विल सेंड वेरी गुड सिग्नल। उन्होंने कहा है कि अगर फिजिकल डेफिसिट में हम कमी ला सकें तो ये हमारा बहुत बढ़िया सिग्नल जाएगा वर्ल्ड लेवल पर। तो आसमा गोयल इज वन ऑफ द थ्री एक्सटर्नल मेंबर्स ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। According to Goel, the government should continue to focus on building physical and human capital in 2024-25 interim budget, as the level of private investment in these areas is less than optimal. A faster than targeted fall in the physical deficit will send a very good signal, as said Asima Goel, one of the three external members on the Reserve Bank of India's RBI Monetary Policy Committee (MPC). Physical deficit should be counter-cyclic and build buffers to be able to spend more in bad times. A faster reduction will send a very good signal, Goel told Money Control following the release of the minutes of the December 6 to 8 meeting of the MPC on December 22. The rate setters comments come just over a month before Finance Minister Nirmala Sitharaman ji presents in the 2024-25 interim budget on February 1st, with the Lok Sabha elections expected to be held in the second quarter of 2024. While the finance minister is seen to be meeting this year's fiscal deficit target of 5.9% of GDP, it will have to target a significant reduction next year if it wants to achieve its medium-term objectives of reducing the deficit to 4.5% by 2025-26. Steady reduction in government's debt to East Asian level will improve Indian ratings, reduce risk premiums and the cost of borrowing abroad. It will also show how unfounded is the IMF prediction that Indian government debt is likely to exceed 100% of GDP from current levels of 81%. Goel added, referring to the IMF's International Monetary Fund observations in its recent article 4,
consultation report that given the shocks India has faced, its debt to GDP ratio could exceed 100% in the medium term. According to IMF data, India's general government debt central plus state in 2022 stood at 81% of its GDP, well above the figures for East Asian countries such as Vietnam 39%, Indonesia 40%, Philippines 58%, Thailand 61%, and Malaysia 66%. More immediately, Goel thinks the central center should not be tempted to overspend on account of beyond tax revenue. This is what unfortunately happened in the high growth period of 2000s and led to the macroeconomic vulnerabilities of the 2010s. She said, adding that the interim budget should continue to focus on building physical and human capital areas that see suboptimal private investment. However, she also sees well designed incentives and better governance, resulting in better outcomes even if the expenditure is lower. For example, we have universal school enrollment and new colleges and universities are mushrooming, but attention now has to be paid to the equality of education. More delegations to the third tier and accountability to the user will help improve public services, Goel explained. Inflation and rate cuts. Days after Goel and her fellow MPC members left the repo rate unchanged at 6.5% for the fifth meeting in row. Statistics Ministry's data showed that the headlines retail inflation rate had jumped to a 3 months high of 5.55% in November. However, not only was the print lower than expected, consumer price index CPI inflation to is seen to be the easing in 2024, with the RBI pegging it at 4% in July September 2024. In her statement in the minutes of the December 6 to 8 meeting, Goel warned that if inflation moves towards the medium term target of 4% in sustainable manner by mid 2024, real interest rates can easily become too high if nothing is done. In her interview with the Money Control, Goel clarified that by if nothing, sorry, Goel clarified that by if nothing is done, she was referring to rate cuts. At the same time, she warned that commodity shocks in the past had stopped the RBI's inflation forecast from approaching 4%. Therefore, it is essential that MPC wait for more data to confirm that the inflation trend is sustaining. Data coming in the next few months is not expected to lead to a rise in forecasts, is added. While headline inflation rose in November, core CPI inflation eased to 4.1% according to Goel, emeritus professor at Mumbai Indira Gandhi Institute of Development Research for कहाँ से आ गया ये? While headlines inflation rose in November core CPI inflation is to 4.1% according to Gale. Emirates professor at Mumbai's Indira Gandhi Institute of Development Research falling core inflation suggests the output gap is not yet positive. Output gap is the difference between an economy's actual output and what it can potentially produce. When the gap is positive, it can lead to demand pull inflationary pressures. Asked if the MPC should target core inflation instead of the headline numbers, which is heavily influenced by the volatile food prices. Pointed out that the headline inflation number is key as it impacts consumer welfare, household inflation expectations, and second round inflationary effects. Price and wage hikes by firm in response to increase in prices of items such as food and fuel. As such, reducing headlines inflation is a valid social goal, she said. A smaller food basket at the same time the large weight of food and commodities in the CPI basket means supply side measures and coordination between the fiscal and monetary authorities is the
way to reduce inflation with the least growth sacrifice, Goel noted. The increase in rental inflation is November was the increase in retail inflation in November was driven primarily by an unfavorable base effect and a rise in food prices, particularly of vegetables, which propelled food inflation into 8.7% from 6.61% in October. However, Goel sees some positive in India's overall food inflation dynamics. Although volatility has increased, its persistence and pass through to core inflation has fallen. Under the mature inflation targeting, transient supply shocks can be overlooked as inflation expectations say anchored. We seem to be getting there, she explained. What may be helping reduce the pass through of a good inflation to headlines inflation may be the fact that the weight of the food items in a consumer basket is lower than what the CPI assumes. On average, food now comprises about 30% of the consumption basket. So, second round pass through from food to core inflation is lower. The vulnerable sections for whom food still dominates consumption are getting free food, she added. Per the current CPI series, if, the food and beverage group makes up 45.86% of the basket. However, the consumption basket measured by CPI has not been updated in more than a decade. तो ये था हमारे आसमा गोयल जी का जो एमपीसी की मेंबर हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मेंबर हैं आसमा गोयल जी, तो इनकी बात की वैल्यू होनी निश्चित ही है। तो इन्होंने जो बहुत सारे अपने विचार रखे हैं इस मुद्दे के ऊपर कि गवर्नमेंट को फिजिकल डेफिसिट कम करना चाहिए, इन्फ्लेशन वगैरह का जो इन्होंने एग्जांपल साइड किया, रेपो रेट वगैरह की बात उन्होंने की, और नेट आउटपुट की उन्होंने बात किया, और गवर्नमेंट में कोई धीरे डेप को रखना चाहिए। उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी से तुलना की, तो वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक्सपोर्ट हैं। और अगर फिजिकल डेफिसिट कम हो जाए तो निश्चित रूप से बेहतर हो, स्थिति तो मान ही जाएगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। हाँ, हालांकि अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें, अगर और दूसरे देशों के से तुलना करें तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति फिर भी बेहतर है, लेकिन अ, ये अगर कम कर लें तो हमारी स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। दैट इज ये पॉइंट हम मुझे जो समझ में आ रहा है इसका मतलब यही है। थैंक यू।